Let me start with section B. Alright, question number 1. देखो, some of you did attempt this question. It is simply asking you to use PPC diagrams to explain the effect on an economy's output of increased use of existing labor and increased availability of natural resources. Now, this question में some of you went on and I could easily see कि you don't know the answer, तो मैं भी left right मारने की कोशिश कर रहे हो, which is simply a waste of time. A level में you won't get numbers for just throwing around flukes here and there. So तुमने PPC use करनी है इसमें. Remember the first 2 marks out of 8 in this question, and let me do it in black I think, or blue would be better. So यहाँ पे out of the total 8 marks यहाँ पे पहले 2 marks तुम्हारे होंगे. This color is also not working. I'm sorry, the colors don't seem to be working. चलो, this is fine. 2 marks are just for definition that PPC is a curve that shows the maximum possible combinations of 2 goods that a country can produce, and then you will have to sketch a PPC. Now, graphs may, I mean, you are still not being careful. I don't know how can I stress this more, that PPC may, the thing that will fetch you these 2 marks is the labeling, and that labeling just requires you to choose good A and good B, any 2 different goods on these X's. You can actually come up with a name good like cars versus footballs or whatever goods you want, but यहाँ पे 2 different goods label हुए हो, and then just sketch either a curve or a straight downward sloping line. So that would be your first 2 marks in this question कि what is PPC. उसके बाद look, stick to your basic concepts. You don't have to tell stories here. तुम्हारे से simple ये पूछा जा रहा है कि explain on this model how will it show the effect on an economy's output of increased use of existing labor and increased availability of natural resources. Now इसमें the basic concept you had to remember was कि ये जो PPC तुम्हें productive capacity, मुल्क के एक productive limit जो depict कर रही है graphically, that limit exists because your country's resources of land, labor, capital and enterprise, these resources are limited. So part 1 is saying that you start using your existing labor. You increase the use of your existing labor, which means कि जितना labor था उतना ही है. The amount of labor is not increasing, so your productive capacity, your potential, your PPC, it will not change. Because that depends on, remember, the quantity and the quality of these resources or the state of technology. So first part उसमें वो कह रहा है कि you just start using your existing resources in a greater, larger way, which means capacity capacity will be the same, PPC will be the same. What will happen is कि if you are not using all of your resources, then you are inside your PPC. And as you start using more and more of your resources, so you will start moving towards your PPC. That was the simple answer to part number 1. You will start moving from inside PPC towards your PPC because you are using more of your country's available resources. So you will start producing an amount which is closer to your capacity, to your PPC. Then part number 2 is saying the effect on an economy through this PPC of an increased availability of natural resources. Now natural resource, remember, that is your resource of land. All the natural resources, they are termed the resource of land. So part 2 में वो कह रहा है कि there is increase in your resource of land, and when your resources increase, you can make more of both the goods, and therefore your entire PPC will shift outwards. That was it. So this is where I'm saying you don't have to give long answers. और अगर ये 2 point तुमने नहीं बताए, and if you have not depicted them through these simple graphs, you won't get marks. जितने मर्जी left right कहानियाँ फजूल की लिखो. Now this is an important concept. Some of you who practice past papers, I have already told you about this. कि this is tested again and again. कि अगर तुम्हारी existing resources they stay the same, but you start using more of them,
तो आप क्या करते हो, you from inside your PPC you start moving towards your productive potential, you are using more of whatever resources you have, whereas अगर resources की quantity या quality ही बढ़ जाती है, then we say your productive capacity, the entire PPC increases. आप कह रहे हो your potentially the total amount of output that you can produce. If you have more resources, your potential will increase, your PPC will move outwards. So that was your part A of this question, which was not well answered by a lot of you. Left, right की फजूल की, you are just wasting time. इस पे किसी को question हो तो मुझे बताओ. I mean, I have gone on this for quite some time. किसी को अभी भी कोई confusion हो as to how you are supposed to answer and what you are supposed to write, तो please ask me. अच्छा जी. Then the next part of this question, 12 marks, discuss the view that supply side policies to increase the supply of labor to an economy are likely to be more successful than those designed to increase the supply of entrepreneurship. Can anybody unmute and translate this for me in Urdu? इसको translate करो इस question को. What is this question asking you? उर्दू में बताओ मुझे. Anybody? Please बच्चों take advantage. Unmute yourselves. अपनी तैयारी करो. I mean, you should be trying to be the first one. इससे ज़्यादा मैं डायरेक्ट तैयारी तो नहीं किया करूँ. क्वेश्चन की उर्दू में ट्रांसलेशन करो पार्ट बी की. व्हाट इज दिस क्वेश्चन आस्किंग यू? वो क्वेश्चन रीड करते हैं. Discuss the view that supply side policies to increase the supply of labor to an economy are likely to be more successful than those supply side policies which are designed to increase the supply of entrepreneurship. Can anybody tell me in simple plain उर्दू के ये क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है? सर हमारे दो वो हैं, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, लेबर है, और एक वो एंटरप्रेन्योरशिप यानी हमारी वो एंटरप्राइज वाले में आ जाएगा. तो क्वेश्चन क्या पूछा है मुझे बताओ. व्हाट इज द क्वेश्चन आस्किंग यू? कोई और भी अनम्यूट कर सकता है. आमना हैज़ प्रॉब्लम सीइंग दिस. जो बाकी तुम बैठे हो प्लीज़ ट्राई टू ट्रांसलेट मी दिस फॉर मी इन उर्दू. I'm not asking you to do a difficult thing. जल्दी करो यार. We are not supposed to sit here all night. जल्दी से करो. Unmute somebody. कि अगर सप्लाई ऑफ लेबर इंक्रीज करना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा इकोनॉमी को या फिर सप्लाई ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप? More likely to be successful. Beneficial नहीं. It is just saying कि supply side policies हमने पढ़ी हैं. Those are all the policies that try to increase the country's potential output or reduce the country's cost of production. Potential output in turn, how does that increase? Well, supply side policies are all those policies which try to increase the quantity or quality of these four resources. So any policy जिसकी वजह से इन resources की quantity या quality increase हो, that is your supply side policy. Now this question is not asking you to explain कि supply side policy का रट्टा शुरू हो जाओ कि aggregate supply curve will shift to the right and therefore price levels will fall and GDP will increase. That is what most of you are doing in this question. Question को पढ़ तो लो. It is not asking you what a supply side policy is. It is not asking you how does it work. It is not asking you what is the effect of supply side policy. It is simply asking you कि those supply side policies which try to increase the quantity of labor versus those supply side policies that try to increase the quantity of entrepreneurs. इनमें से which of these two policies are likely to be more successful? So again you do the same mistake कि supply side policy का नाम देखा है तो साथ ही जो तुमने रट्टा लगाया है ना, aggregate supply moves to the right, price गिर जाती है. It is not asking you about all of those things. So इस question में 12 marks, this is the division that you have to keep in mind. 4 marks would be to discuss any two policies through which you can increase the amount of labor. Then there would be separate 4 marks for the discussion of any two policies or any two ways in which the government can try to increase the amount of entrepreneurs. And then 4 marks would then be reserved for a discussion of अच्छा इनमें से labor versus entrepreneur, which of the above policies that you have discussed which are more likely to succeed.
Now this is the breakup. उसके बाद तुमने fill in the blanks करने हैं. Please get into the habit of making this breakdown before you start writing. अब मुझे बताओ, can anybody think of 2 ways in which the government can try to increase the amount of labor? सर हम इमिग्रेशन encourage कर सकते हैं, फीमेल वर्कफोर्स. So देखो 2 पॉइंट एक ही सेंटेंस में क्यों खा रही हो तुम? Look at the structure. एक पॉलिसी लहदा से बताओगी, डिस्कस करोगी, देन यू विल टेल दी अदर पॉलिसी, यू विल डिस्कस इट. अभी एक ही लाइन में तुमने दोनों बातें कर दी हैं. वी कैन इंक्रीज दी फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन एंड इमिग्रेशन. तुम्हें 4 की बजाय 2 नंबर मिलेंगे क्योंकि यू हैव मेंशन 2 पॉलिसीज बट यू आर नॉट डिस्कसिंग दैम. सो उसको डिस्कस में, आई मीन ऑल आई एम सेइंग एंड ऑल यू आर रिक्वायर्ड टू डिस्कस और एनालाइज इज कि अच्छा इमिग्रेशन इंक्रीज़ कर दोगे तो वहाँ से लेबर की क्वालिटी बढ़ जाएगी, क्वांटिटी बढ़ जाएगी. Is there any difficulty or any issue you can think of in this policy? Question तुम्हारे से पूछे which is likely to be more successful. तो कोई आसानी या मुश्किल नज़र आती है when you try to implement this policy कि अच्छा इमिग्रेशन के थ्रू लेबर बढ़ा लेते हैं मुल्क में? सर जो दूसरे कंट्रीज हैं वो कोशिश करेंगे जो उनका स्किल्ड लेबर है उनके पास ही रहे. So that is one way of saying this. Another way of saying this is कि okay इसमें ये है कि you just don't have to attract immigrants, you have to attract highly qualified skilled immigrants, which is not always that easy because पूरी दुनिया में हर मुल्क इस काम की कोशिश कर रहा होता है. So that is all I mean when I say कि अच्छा यार कोई reasonable analysis दे दो. Don't just throw the point कि immigration बढ़ जाएगी. उसमें कोई आसानी, उसमें कोई मुश्किल, उसके बारे में तुम्हें कुछ भी पता है, just mention it here. कि you'll have to make sure कि skilled labor आता है तुम्हारे मुल्क में. You can even bring things like terrorism here कि आजकल ये बड़ा मसला है कि आप labor immigrate करते हो उसमें साथ terrorist भी आ जाते हैं. I mean throw in any reasonable logical thing once you have the point. So that will be your 2 points कि immigration and 1 line explaining or saying something about immigration की जो policy है to increase labor. Is it easy, difficult, अच्छी है, बुरी है? उसके बाद दूसरा क्या तुमने female labor force participation बोला है. How will you explain that? What is female labor force participation? How will the amount of labor increase because of that? And is that an easy policy कि आज सोच लिया और कल हो जाएगा? How would you analyze this point, female labor force participation to increase the amount of labor? सर इससे तो क्वांटिटी और क्वालिटी बढ़ेगी हमारी लेबर फोर्स की, क्योंकि फीमेल देखो, की मतलब स्किल्स की स्किल ऐड होंगी हमारी लेबर फोर्स वगैरह में. So is it likely to be successful? Is it likely to be successful? This is what the question is asking. What you have told me just now is fine, but you have just told me कि अच्छा what will this do? Which is okay कि female labor whose participation, females will participate more labor. So नहीं that सर, will- क्योंकि सर इसका एक ये नेगेटिव पॉइंट हो सकता है क्योंकि कंट्रीज के कल्चर होते Exactly. हैं, तो इसलिए इट्स नॉट. That is all. So इसको मैं इसीलिए तुम्हें बता रहा हूँ. I mean there is not even enough economics in this question. ये simple सा तुम्हें question अगर if you can break it down into this, मुल्क में लेबर बढ़ाना है, can you think about 2 ways and the problems you will face? पहला हम कह रहे हैं immigration is one way, but उसमें मसला ये है you have to attract skilled labor and you have to ensure कि कोई terrorist साथ ना आ जाए. The other way is encourage your females to leave homes and start working and join the labor force. Problem, in some countries the culture of those countries is not in favor of women leaving their homes and working. So आप culture overnight तो नहीं change कर सकते. So this is a huge sort of a problem when countries try to do this. You have your complete 4 marks for labor को कैसे बढ़ाना है. Now come to entrepreneurs. Can you think about any policy? If just assume that you are in charge of your country and you can do anything, you can announce and order anything, and your aim is entrepreneurs बढ़ें. Anybody other than Amna? We have 17 more people in the class. Anybody else? Amna, sorry beta, I'm not trying to discourage you, but सर अगर एंटरप्रेन्योर्स हैं तो हम लोग इंटरेस्ट उनके लिए थोड़ा सा कम कर सकते हैं, इंटरेस्ट फ्री उनकी कर सकते हैं. very good. Interest free loans. लोन इजीली दे सकते हैं. Interest free loans and you can make collateral free loans, but you have a perfect point कि उनके लिए लोन लेना आसान कर दें. What will that do? It will just write this line. That will encourage more and more people to borrow. अच्छा उसमें I mean what are the sort of problems involved? उसमें तुम कोई प्रॉब्लम नज़र आती है? If you start giving more loans to entrepreneurs today, what is the problem that will create? Any issue, any problem? Is it an easy policy to implement?
सर अगर लोन्स देंगे तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी सर ज़्यादा I mean, you can come up with a problem, that is fine. मेरे जहन में क्या आ रहा था, look, be strategic about it. आखिर में कंक्लूड भी तो करना है ना. तो देखो अभी तक इसमें हमने मुश्किल ढूंढ ली है ना कि कल्चर चेंज करना इट्स नॉट ईजी. टू अट्रैक्ट स्किल्ड लेबर फ्रॉम अदर कंट्रीज नॉट दैट ईजी. तो कहो ये ईजी है भाई. दिस इज़ क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड. हर मुल्क में बैंक्स भी होते हैं. यू नो मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज दे हैव द बेसिक बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. सो इट इज़ एन ईजी पॉलिसी. इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड क्विकली. प्रॉब्लम निकालनी हो, वन प्रॉब्लम यू कैन थिंक ऑफ, अगेन थिंक ऑफ योर ओन कंट्री. 70% of the population is living in rural areas. There you don't have modern commercial banks, and therefore implementing this policy and getting these loans to all the people across the country, it's just not easy. तुम्हारे पास banking का infrastructure ही नहीं होता. Okay? So again, I mean, not a lot of economics. I would again stress the same thing. पहले break down कर दो. 2 policies चाहिए मुझे, मैंने उनमें मसले निकालने. Okay, what is the last policy? Anything else? What can you do to encourage entrepreneurships or entrepreneurs in your country? Yes, there is another one. Lowering the rate of corporate or profit tax. It can be considered a supply side policy as well. Rashk ne suggest किया ये answer कि if you have to encourage new entrepreneurs, तो profits पे tax कम कर दो. Corporate profits पे टैक्स कम कर दो, and that is an additional incentive for someone to jump in and work hard to set up a new business. वो ज़हन में नहीं आता तो just go for education. MBA schools, business schools ज़्यादा कर दो, business studies पे ज़्यादा जोर देने लग जाओ, entrepreneurship societies पे ज़्यादा जोर देने लग जाओ in your universities. That is another policy where you can encourage entrepreneurs. Now उसमें से again, I mean, as I have been building up this answer, not because of any specific conviction, but जो मुझे reasons मिलते रहे हैं, the conclusion is really easy, and this is where all of you start losing marks. तुम जितनी मर्जी अच्छी पॉलिसी और एनालिसिस दे आओ, इफ़ यू डोंट कम अप विद दिस लास्ट पार्ट, ये जो यहाँ पे छुप गया, एंड लेट मी सेपरेट इट सो दैट यू रिमेंबर दिस. ये आखिर का कंपैरिजन नहीं करोगे तुम कि ओके, द क्वेश्चन आस्क यू which of these two policies, either the ones trying to increase labor or entrepreneur, which of these are more likely to be successful? So ये तुम्हारा जो आखिरी पैराग्राफ है, that has to address that question. Now उसमें I mean, don't just, I'm not saying कि बिल्कुल बेवकूफ़ों वाली बात कर रहा हो, but any logical thing जो हमने policies discuss की हैं, one logical conclusion can be that look, immigration attract करना, female labor force participation, as I said, you have to change the culture, so it's a long term policy, it will take a lot of time. Whereas if you go for these things to attract entrepreneurs, usually generally they can be done in a quick way. And एक और अगर इसका फ़ायदा सोचो, would you want more entrepreneurs or more workers if you are given an option? कि कल तुम्हारी इकोनॉमी में 1000 और वर्कर आने लगे, would you want more entrepreneurs or more laborers, workers? Sir, entrepreneurs. Why? Sir, workers like you. दोनों बोलो. Good. सर अगर एंटरप्रेन्योर्स मतलब हमारे मुल्क में बिजनेसेस होंगे, एंटरप्रेन्योर्स होंगे, तो फिर ही मतलब लेबर की ज़रूरत होगी ना. मतलब an easy way of saying this is more labor means more people looking for jobs, which is good, but more entrepreneurs mean more people who will set up more businesses and create more jobs and innovate, and you have a perfect conclusion and a pretty genuine conclusion. इसमें again I am saying तुमने कुछ जाली चीज़ नहीं देखनी, just think about it. तुम कह रहे हो entrepreneurs versus workers, कहते हो entrepreneurs ले आओ, they will set up businesses, they will create jobs, they will bring in innovation. Worker जो है, think about your own country, तुम्हारे पास और farmer आ जाएगा, so what? Okay, so that is one way in which you can conclude it. There are hundreds of different ways in which you can reach this conclusion, but what I wanted you to learn from this is कि तुम्हारे से 2 चीज़ों की बात हो रही है, so underline those things. Whether increasing the supply of labor or the supply of entrepreneurs, which is more likely to be successful. So 4 marks of how you can increase labor, 4 marks how you can increase entrepreneurs, and then 4 marks for a discussion कि इनमें से कौन सा ज़्यादा आसान या कौन सा ज़्यादा likely है. Any questions? Does this help you? सर मेरे पास एक सवाल है. हाँ पूछो. तो ये जो
एक एंटरप्रेन्योर होता है, उनको काफ़ी ज़्यादा वर्कर्स चाहिए होते हैं बिजनेस शुरू करने में, तो फिर वर्कर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते? Okay, you can reach that conclusion. You can say, assuming that the problem your country faces is a lack of workers, तो उस तरह के मुल्क में लेबर ज़्यादा ज़रूरी है. बट इफ़ यू ऑलरेडी हैव enough labor, then having more entrepreneurs is good. वही तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, anything logical. It's not about right or wrong. And make assumptions. जो तुम्हारे जेन में पॉइंट आ रहा है, जस्ट से दैट आउट कि आई एम अज्यूमिंग कि अगर एक मुल्क में प्रॉब्लम इज़ लैक ऑफ लेबर तो उसके लिए लेबर ज़्यादा अच्छा और ज़रूरी है. बट आई मीन एक्चुअली वी आर गोइंग ऑफ ट्रैक है. ये क्वेश्चन हमारे से पूछ रहा है विच इज़ मोर लाइकली टू बी सक्सेसफुल. हम किसी और तरफ चल पड़े हैं. बट लेट्स नॉट स्क्वीज़ मोर आउट ऑफ दिस क्वेश्चन. बट फ़िलहाल ये 3 पार्ट्स याद रखो. दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. I mean, you don't lose marks because तुम्हारी जो explanation या जो point है that is not perfect. That is not where you lose marks. Where you lose marks is कि तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं होता और तुम 8 मार्क्स छोड़ के बस एक ही 4 मार्क के पीछे पड़े रहते हो. You may end up giving a perfect explanation of those 4 marks, but उसके अलावा नहीं तुम्हें नंबर मिलने. So that is what I want you to take out of this question. हाँ. सर इस क्वेश्चन को स्टार्ट किस तरह करेंगे? मैं ओ यार, डजंट मेक अ डिफरेंस. ये को अंग्रेजी का पर्चा थोड़ी है, स्टार्ट कैसे करेंगे? बस लेबर से बेसिक स्टार्ट. आई मीन आई वुड अगेन से द सेम थिंग. कंटेंट पे फोकस करो. स्टार्ट कहाँ करेंगे? डजंट मेक अ ह्यूज डिफरेंस. फोकस ऑन द कंटेंट. यहाँ से स्टार्ट करो कि देयर आर डिफरेंट वेज इन विच सप्लाई ऑफ लेबर एज वेल एज सप्लाई ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी इंक्रीज्ड. लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन हाउ सप्लाई ऑफ लेबर कैन बी इंक्रीज. इस तरह से शुरू कर लो यार, किसी तरह से भी शुरू कर लो, एज लॉन्ग एज यू आर डिवाइडिंग योर आंसर इन टू दीज 3 पार्ट्स. और यहाँ प्लीज़ स्टार्ट चेंजिंग पैराग्राफ्स. सम ऑफ यू राइट वेरी वेल, योर रिटन इंग्लिश इज़ वेरी वेल, बट नो बडी हैज़ टॉट यू कि अच्छा पैराग्राफ भी चेंज करना पड़ता है. सो इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ आंसरिंग योर क्वेश्चन इन 3 डिफरेंट पार्ट्स, सो मेक 3 डिफरेंट पैराग्राफ्स एंड डोंट वरी टू मच अबाउट के स्टार्ट कहाँ से करना है. जस्ट गेट इन टू द थिंग. Anything else? Chalo, let me move on to the next question then. So question number 3. Explain what is meant by consumer surplus. अपने आप को पहले ही बता दो 2 numbers, meaning or definition of consumer surplus. Divide किया करो. Again, make it a habit. As you read the question, make divisions. कहाँ से कितने नंबर मिलने. Explain what is meant by consumer surplus and use diagrams. Underline this thing. I don't get it when the question is asking you to use diagrams. उसके बावजूद तुम diagram नहीं बनाते. So you can say whatever golden words you have to say. नंबर नहीं मिलेंगे तुम्हें. So explain what is meant by consumer surplus and use diagrams to assess the impact on consumer surplus when an indirect tax is imposed on a good with price elastic demand compared with the impact when the demand is price inelastic. So अपने आप को बताओ 8 marks हैं. I will define what is consumer surplus, then I will explain the impact of indirect tax, then 2 marks when demand is elastic, what happens? 2 marks when demand is inelastic, what happens? Make this outline first of all and then forget about कि मेरे question का structure क्या है. Just straight away start off with the definition. Now this is something यहाँ पे I don't want to repeat those things. अगर तुमने अभी revise करना है तो you have the videos but you are still not getting it right. Consumer surplus की तुम लोग definition ही अभी तक ठीक नहीं लिख रहे. I mean that is not something I can do for you. So it's the maximum price that some consumer is willing to pay versus, or I should say minus, the price that is actually paid to get that good. Just write down this formula. Or I mean when I say just write down this formula, तो ये formula लिखा उसके नीचे एक line लिख दिया करो कि consumer surplus is the benefit to the consumer calculated as the difference between what I have just written over here. So those are your first 2 marks. इसमें maximum price नहीं लिखोगे, you will lose a mark. That idea is important कि a consumer in his own mind has a certain maximum that he would be willing to pay. वो किसी और को नहीं पता. Maybe the consumer himself doesn't know it very well कि मेरी maximum willingness क्या है, but that is a theoretical idea. So if you don't mention this word maximum price willing to pay versus the price actually paid, तुम्हें definition की number नहीं मिलने पहले. So this is where you start throwing away marks.
Now what will an indirect tax do? Now some of you had a good short answer over here. Indirect tax, it's a burden on the producer, or it's an increased cost of production for the producer, but the producer tries to pass on this burden by increasing the price. How much price will we be able to pass on, and therefore how much price will increase depends on the elasticity of demand. उसके बाद graphical question है, I mean verbally you don't have to go on and on, just you have to reproduce your diagram of the impact of indirect tax. Again something अगर तुम्हें पेपर में बैठे हुए नहीं आ रही तो I mean मुझे तुम्हारे पे तरस नहीं आएगा, गुस्सा आएगा, because this is something you know that you have to know before going into your A-level exam. Indirect tax start off with an assumed equilibrium, shift the supply curve to the left and mark out कि अच्छा price बढ़ जाएगी and quantity कम हो जाएगी. Now here I have drawn the general impact of tax, but to save time तुम्हें पता है कि तुम्हारे से वो elastic और inelastic का पूछ रहा है demand का. So first of all give a quick verbal explanation. If demand is elastic, consumer is sensitive to price changes, so अगर price बढ़ेगी he will leave the market, which means producers cannot pass the burden on to the consumer. Again explain in words, inelastic demand, it means consumers keep on buying the product regardless of price को क्या हो जाता है, maybe they don't have any substitutes, so in this case producer will pass most of the burden on to the consumer, price will increase a lot. ग्राफ जो आखिर में तुमने बनाना है, आई हैव गिवन यू और जस्ट रिकॉल यू अबाउट द जनरल ग्राफ ऑफ टैक्स, बट ऑल यू नीड टू डू इज़ कि जो जनरल ग्राफ आता है टैक्स का वही बनाना है. जस्ट ड्रॉ द डिमांड कर्व एज बीइंग फ्लैटर देन द सप्लाई कर्व और फिर टैक्स का इम्पैक्ट शो करो. द ग्राफ विल डू द रेस्ट फॉर यू. सिमिलरली जब इन इलास्टिक की बात कर रहे हो यू हैव टू शो इट थ्रू अ डायग्राम. इसमें वैसे डायग्राम उसने कहा है, यस थ्रू डायग्राम. So again make it a habit to label it. Micro का diagram है, so it will be PQ. Inelastic demand means your demand will be steeper than a relatively flatter supply curve. Now, Maruk, can you unmute? Yes sir. अच्छा यहाँ this is where I am saying कि तुम्हें सारा कुछ आता है but you sort of throw away easy marks. तुमने ये सारी बात की हुई है, and when you are drawing these graphs, तुमने इलास्टिक इनइलास्टिक दोनों में सेम ग्राफ रिपीट किया हुआ है, एंड यू आर जस्ट सेइंग कि अच्छा ये इलास्टिक केस हो गया, ये इनइलास्टिक केस हो गया. सो फ्रॉम वेयर आई कैन टेल कि तुम्हें इस चीज़ का आइडिया नहीं है. सो ये याद रखो जब भी टैक्स के इम्पैक्ट, टैक्स के, एंड दिस इज़ फॉर ऑल ऑफ यू, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, तुम्हें बार बार ये करना पड़ेगा. इफ़ यू नो द इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, द जनरल ग्राफ, इलास्टिक वर्सेस इनइलास्टिक केस में रिमेंबर इलास्टिक डिमांड मीन्स कि योर डिमांड कर्व इज़ मोर इलास्टिक एंड फ्लैटर देन द सप्लाई कर्व. सो ये तुम्हारा रिलेटिवली इलास्टिक केस होगा. देन उसके बाद जस्ट डू द जनरल थिंग कि अच्छा टैक्स लग गया, सो वॉट एवर वॉज अ स्टार्टिंग प्राइस, टैक्स लगने के बाद द सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट, यू विल मूव टू अ न्यू इक्विलिब्रियम वेयर दिस इज़ द प्राइस द कंज्यूमर विल हैव टू पे, एंड इस प्राइस में से तुम सप्लाई कर्व तक तकरीबन समवेयर हेयर टैक्स निकाले तो दिस इज़ द प्राइस द प्रोड्यूसर विल हैव टू पे. देखो दिस इज़ ऑटोमेटिकली शोइंग यू कि रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड थी ना, सो द कंज्यूमर इज़ नॉट टेकिंग अ लॉट ऑफ बर्डन, मोस्ट ऑफ द बर्डन इज़ गोइंग ऑन टू द प्रोड्यूसर. नाउ द मार्किंग स्कीम एक्सप्लिसिटली स्टेट्स दिस कि if the candidate is not drawing a visibly flatter demand curve, don't give them marks for this elastic case, because this diagram, इस question में diagram से explain करना था. And similarly, if there is a proper verbal explanation of the inelastic case, but the candidate is not drawing a demand curve which is this time much steeper than a supply curve, don't award the marks for graphs. So Maruk, you are the one that come to my mind again and again. तुम अक्सर क्वेश्चन में इस तरह की गलतियाँ करते हो. You know everything, you are making beautiful graphs, but मतलब जो मेन चीज़ है you skip that. And I don't remember by name, but some of you again write irrelevant things over here. Consumer surplus की और कहानियाँ शुरू हो जाती हो. Please stick to what the question is asking. Consumer surplus, what is it and how does it change जब टैक्स लगता है तुम्हारे
elastic versus inelastic पे. Now of course I haven't shown you the consumer surplus का area. वो तुमने जितनों ने भी ग्राफ बनाया हुआ था, you knew how to show the consumer surplus and how is it getting lesser or more. But मैं यहाँ पे क्या highlight करना चाह रहा हूँ कि if the question is specifically asking you elastic versus inelastic demand वाला tax impact through diagrams, तो उसमें be careful. You have to change the slopes of your demand supply curves to reflect these things. ठीक है, इसके बारे में किसी ने कुछ पूछना हो तो let me know. Anything, anybody? सर मैं एक चीज़ पूछ लूँ? हाँ ज़रूर. सर जब जो सप्लाई कर्व शिफ्ट होता है और प्राइस इंक्रीज होती है, लेकिन हम देखते हैं कि कंज्यूमर्स अगर जो डिमांड कर रहे हो वो इलास्टिक हो तो कंज्यूमर्स मार्केट छोड़ जाती हैं, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि सप्लाई कर्व और ज़्यादा हो जाए, इतना हो जाए कि जो प्राइस है वो जो पहली वाली प्राइस थी प्लस टैक्स, मतलब जो सारा जो बर्डन है वो जो सारी जो एक्स्ट्रा प्राइस है वो जो कंज्यूमर्स है वो मतलब पे करें. उसके लिए देखो, उसके लिए देयर इज़ अ कंडीशन फॉर दैट ना. थिंक अबाउट इट पहले ग्राफ पे जाने से. यू आर सेइंग दैट इफ देयर इज़ अ टैक्स ऑन अ प्रोडक्ट ऑल ऑफ इट शुड बी ट्रांसफर्ड ऑन टू द कंज्यूमर, यही कह रहे हो ना? नहीं सर, मैं कह रहा हूँ कि जो प्रोड्यूसर उनके पास इतनी पावर है कि अगर इलास्टिक डिमांड है और कंज्यूमर्स मार्केट छोड़ जाएं तो वो और इंक्रीज कर लें प्राइस. क्यों? इस तरह से वाई? ताकि सारा जो बर्डन है वो कंज्यूमर्स पे किस तरह से जो प्राइस बर्डन है वो कंज्यूमर्स पे हो जाए. नहीं वो तो सही है, बट देखो उसमें अगेन वही बात है ना. इट्स लाइक प्रोड्यूसर इज़ थ्रेटनिंग कि मुझे अगर बर्डन पास आना करने दिया तो मैं मार्केट छोड़ के चला जाऊँगा. लॉ ऑफ सप्लाई, मेरे लिए इफेक्टिवली प्राइस कम हो रही है. दूसरी तरफ कंज्यूमर इज़ थ्रेटनिंग कि अगर प्राइस बढ़ी ना तो मैं भी मार्केट छोड़ के चला जाऊँगा. ना प्रोड्यूसर कंज्यूमर बोथ नीड ईच अदर ना, तो वो दोनों एक दूसरे को धमकी लगा रहे हैं यहाँ पे. ये तुम आगे जाके इफ़ यू स्टडी इकोनॉमिक्स तुम गेम थ्योरी में पढ़ोगे, देर आर बेसिकली थ्रेटनिंग ईच अदर. प्रोड्यूसर कह रहा है कि अगर मुझे बर्डन रखना पड़ा ना, मी मीनिंग द प्रोड्यूसर, तो कहते हैं मुझे इफेक्टिवली प्राइस कम मिलनी है, सो आई विल नॉट सप्लाई दिस प्रोडक्ट, आई लीव द मार्केट, आई विल क्लोज माई शॉप. कंज्यूमर इज़ थ्रेटनिंग कि अच्छा अगर तुमने फिर मेरी तरफ बर्डन फेंका ना बाय इंक्रीजिंग द प्राइस तो मैं भी मार्केट छोड़ के चला जाऊँगा. ना तुम जो कह रहे हो कि अच्छा प्रोड्यूसर पास ऑन कर दे, इलास्टिक डिमांड है तो क्या हुआ, उसमें ये होगा मार्केट खाली हो जाएगी. विच इज़ वेयर वी आर सेइंग कि अच्छा इफ़ द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर्स इज़ रिलेटिवली मोर इलास्टिक देन द सप्लायर्स देन द प्रोड्यूसर्स, तो हम कह रहे हैं कंज्यूमर की थ्रेट इज़ क्रेडिबल, वो एक्चुअली मार्केट छोड़ के चला जाएगा. एंड दैट इज़ वेयर हम कहते हैं अच्छा फिर प्रोड्यूसर पंगा नहीं लेता. ही नोज़ के कंज्यूमर की इलास्टिक डिमांड जो थ्रेट दे रहा है इट इज़ क्रेडिबल, वो वाकई मार्केट में नहीं आएगा. सो प्रोड्यूसर्स दे कीप द बर्डन और वो कंज्यूमर को कहते हैं अच्छा भाई थोड़ा बहुत आप कंट्रीब्यूट कर दो बट डोंट लीव द मार्केट. Whereas when the consumer's demand is inelastic relative to the producers, relatively inelastic demand, तब प्रोड्यूसर को पता है कि अच्छा मुझे धमकियाँ लगा रहा है कंज्यूमर कि इफ़ यू पास द बर्डन, इफ़ यू इंक्रीज द प्राइस, आई एम थ्रेटनिंग यू, आई लीव द मार्केट. बट प्रोड्यूसर कहता है आई नो इन इलास्टिक डिमांड है, इसकी थ्रेट इज़ नॉट क्रेडिबल, ये एम ही मुझे धमकियाँ लगा रहा है, ही विल नॉट लीव. मे बी ही डजंट हैव सब्सिट्यूट्स, मे बी ही इज़ एडिक्टेड टू माई प्रोडक्ट, वॉट एवर द रीज़न इन इलास्टिक डिमांड है, ये कभी भी मार्केट छोड़ के नहीं जाएगा. सो द प्रोड्यूसर विल थ्रो द बर्डन ऑन दोज कंज्यूमर्स. सो कमिंग बैक टू योर ओरिजिनल क्वेश्चन. हाँ बताओ. सर हम तो हर केस में जो सप्लाई कर्व है उसको सेम उससे वो करते हैं शिफ्ट, तो ऐसा नहीं, इट्स नॉट. देखो वी आर नॉट थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ शिफ्ट्स ऑफ सप्लाई है, थिंक मोर इन टर्म्स ऑफ द इलास्टिसिटीज़. देखो जब भी तुम डिमांड और सप्लाई की इलास्टिसिटीज़ को कंपेयर कर रहे हो ना, सो यू हैव टू कंपेयर कि अच्छा एज़ कंपेयर टू रिलेटिव टू द डिमांड प्रोडक्ट की सप्लाई ज़्यादा या कम इन इलास्टिक है. डिमांड के जो शिफ्ट्स हैं, आई मीन दैट इज़ जस्ट अ ग्राफिकल थिंग, वो तुम्हें यही कॉन्सेप्ट हमेशा रिफ्लेक्ट करेगा. आई एम नॉट रियली गेटिंग कि तुम्हारे जहन में क्या क्वेश्चन आ रहा है, बट आई मीन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज़ कि अगर तुम इलास्टिसिटीज कैप्चर कर लेते हो थ्रू द स्लोप्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स, उसके बाद शिफ्ट कितना होता है द मैग्नीट्यूड डजंट रियली मैटर. वो जो तुम स्लोप्स फर्क लोगे उसकी वजह से यू विल गेट ऑल द रिजल्ट्स जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ. क्लियर नहीं हुआ? चलो वी कैन टॉक अबाउट इट एट द एंड ऑफ द क्लास अगेन. सुफियान मैं तुम्हारे से एक बार फिर पूछ लूँगा. आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड तुम्हें क्या चीज़ तंग कर रही है. ठीक है सर. जी आमना बताओ. सर ये जो हमारा ये
क्वेश्चन था अभी हमने किया, तो इसमें इन्होंने कहा है कि ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है उस वो इम्पोज करेंगे, इलास्टिक है, इनइलास्टिक है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो कंज्यूमर सरप्लस पे मतलब लिंक करना है ना हमने। तो सर अब हम वो ग्राफ्स बना देंगे तो ग्राफ्स तो ऑटोमेटिकली वो शो कर देंगे कि जो इनइलास्टिक है उसमें वो कंज्यूमर सरप्लस थोड़ा बड़ा है और जो इलास्टिक है उसमें दैट इज मोर देन इनफ। हमें वर्बल नो जब क्वेश्चन कह रहे डायग्राम एंड यू आर स्ट्रांग विद योर डायग्राम्स, गो फॉर इट, कभी भी नंबर नहीं कटेगा तुम्हारा। आई मीन द मैक्सिमम यू डू इज कि बिल्कुल मतलब गूंगा डायग्राम ना छोड़ा ना, just use a couple of words के as can be seen in the diagram when the demand is more elastic, consumer surplus कम गिरता है, and when demand is inelastic ज़्यादा गिर जाता है। I think I have spoken it the wrong way, but in either case सिर्फ 2 लाइनों में just don't assume कि एग्जामिनर को पता है ग्राफ में क्या हो रहा है। just say a couple of lines to tell him कि अच्छा ये हो रहा है ग्राफ में। otherwise पूरी explanation if you can do it through the diagram, more than enough, that is the best thing। एंड अगेन आई वुड सजेस्ट मार्किंग स्कीम देख लिया करो ना। मार्किंग स्कीम में तुम देखोगे तो उसमें वो पहले बताएगा इलास्टिक केस अप टू 4 मार्क्स, इन इलास्टिक केस अप टू 4 मार्क्स, इफ़ नो डायग्राम्स डोंट अवॉर्ड मोर देन 5 मार्क्स। सो इसलिए आई मीन गो फॉर द डायग्राम, दैट विल गेट यू ऑल द मार्क्स। दूसरी तरफ जाओगे जितना मर्जी अच्छा नंबर अच्छा आंसर दे दो, देयर वुड बी अ लिमिट टू हाउ मेनी मार्क्स यू विल गेट। चलो जी, वी हैव 1 minute left in this session. Let us start one more and hopefully we will be done in the next session. नहीं हुआ तो we'll continue tomorrow। एक और के लिए आ जाओ। मुझे बताओ, इज़ दिस बीइंग हेल्पफुल? अगर तुम्हें किसी और तरीके से, आई मीन आई डोंट नो इफ़ दिस इज़ बीइंग हेल्पफुल देन फाइन, अदरवाइज गिव मी सम फीडबैक। समझ आ रही है इस तरह से? जी सर समझ आ रही है। चलो जी, लेट अस मूव ऑन। अच्छा, अगला जो है पार्ट बी, द 12 मार्क पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। A government is considering whether to adopt a policy of maximum price legislation. So first of all, mark this out, in the market for food, or to provide subsidies, mark this out, to alleviate hunger in a period of food shortages. Discuss whether maximum price legislation or food subsidies are more likely to alleviate hunger under these conditions. Now, देखो, this is a simple question. Basically it is trying to test you on the 2 components of your syllabus, एक maximum price ceilings उनका impact और other subsidies उनका impact. We have learned both of these things through graphs, so all you need to do is you have to repeat कि maximum price ceiling लगती है तो graphically you have to show shortage, black markets, so on and so forth. उस पर मैं आता हूँ, I'll tell you what is specifically that you have to write in this question. But पहले चीज़ याद रखो, in these questions of discuss, these 12 marks question, मैंने खुद तुम्हें ये पहले चीज़ कभी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं की, बट दिस इज़ द टाइम वे यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, इट विल सेव यू सम टाइम। डिस्कस के क्वेश्चन में इन टर्म्स को एक्सप्लेन और डिफाइन करने का कोई मार्क नहीं होता, सो डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दैट। एक्सप्लेन के क्वेश्चन में देयर इज़ ऑलवेज मार्क्स फॉर डिफाइनिंग द टर्म्स दैट यू सी। डिस्कस के क्वेश्चन में जस्ट टेल योरसेल्व्स इट्स एन एक्चुअल सीरियस क्वेश्चन। इसमें एग्जामिनर तुम्हें मुफ्त के मार्क्स नहीं देगा कि तुमने प्राइस सीलिंग मैक्सिमम की डेफिनेशन दे दी है, विच सम ऑफ यू वर डूइंग ओवर हाफ और मोर देन हाफ अ पेज, सो शुड हैव टेकन यू अ गुड अमाउंट ऑफ 10-15 मिनट्स। तो वो टाइम ना ज़ाया किया करो, स्ट्रेट अवे गेट इन टू द क्वेश्चन। सो फूड की प्रॉब्लम है एंड द गवर्नमेंट आइदर इज़ थिंकिंग ऑफ अ प्राइस सीलिंग, जिसको मैं प्राइस सीलिंग कहता हूँ, और इट इज़ नोन एज द मैक्सिमम प्राइस
On the other hand, you have subsidy. Now, the way you break down this question before you write, 4 marks for the discussion of how price ceiling may or may not help, and 4 marks how a subsidy may or may not help. ये तुम में से अक्सर लोगों ने, you had a good explanation over here, but you just totally skipped the last 4 marks. The comparison, price ceiling versus subsidies, you have to come up with a logical argument, इनमें से बेहतर कौन सी है. Okay, so again this is the thing I want to teach you through these sessions कि ये discuss वाले question में don't forget this last part, this is equally important. उसके अलावा price ceiling में remember, I mean it's the same घिसा पिटा रटा, most of you got it right. Let me just draw it over here. कि price ceiling, if you some of you rightly mentioned that if it is a non-binding price ceiling उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना, but if it is a binding price ceiling, that means whatever the equilibrium price is, you come and set a price below that, which means quantity supplied would fall, producers would be discouraged to produce क्योंकि price गिर गई है, the consumers would want to buy much more and that would create shortage. Now if you look at the marking scheme, the examiner is just looking for this graph, again a labeled graph, and he wants you to mark out this thing कि अच्छा ये तुम उसको बता रहे हो कि you know this is the shortage that will be created, and then it is always very good to mention about the black market that will be created. Now this is where you can lose one easy mark. तुम ये सारा analysis दे के आते हो thinking that you had it, you nailed the perfect answer, but again this is something that I am telling you from the marking scheme. Marking scheme कहेगी for the analysis of price ceiling a maximum of 4 marks, but if only negatives are discussed then don't give more than 3 marks. So यहाँ हमने सारे negatives बताए हैं कि price ceiling it won't work, it will discourage the producer, there would be too many consumers, there would be a shortage, there would be black markets, they would have to go for non-price rationing. So ये सारी बुरी चीज़ें हैं. And price ceilings usually are bad, but remind yourselves of the specific way in which your A-level exam is marked कि analysis देना है price ceiling का, so सिर्फ गंदी चीज़ें नहीं बतानी, you have to then come up with one positive, which as some of you rightly mentioned was कि जो थोड़ी सी quantity अभी भी market में आएगी ना, the lucky consumers who are able to get some of these units, they will be better off because उनको ये कम price पे चीज़ मिल जाएगी. So that will be your 4th mark. क्योंकि you have the right analysis, you have all the bad things about the price ceiling, but आखिर में do mention this thing, at least one positive, कि some consumers will at least benefit. Now the subsidy part again required you to give the same basic analysis of subsidy, that the way they work is that it's an assistance from the government, so the cost of production falls and therefore the supply curve shifts to the right, and as a result the equilibrium quantity increases, the equilibrium price falls. So food shortage को ख़त्म करना है, you see you will have more food, the price will also fall. So इसी ग्राफ से देख के तुम्हें पता चल रहा है subsidy is better. Price ceilings, they are populist sort of policies, don't work. The people you are trying to help, they get kicked out of the market, shortage, black markets. Subsidies, they work in a much more efficient way. They do increase the output, the prices do fall, so consumers, producers दोनों को फ़ायदा होता है. Again remind yourselves कि if you just keep on telling the good things about subsidy, maximum of 3 marks, एक उसकी weakness बतानी है, which is simply the opportunity cost, or you can say inefficiency that is created because of firms को मुफ्त के जाके पैसे दे रहे हो, so they are more likely to get relaxed. So after all of this analysis, move to the conclusion जो मैंने तुम्हें अभी actually दे दी है. Price ceilings, they are populist policies and they always lead to these black markets and shortages, whereas subsidies, yes there is an opportunity cost, yes there is a danger of inefficiency, but at least they work immediately and at least they achieve what you are trying to do for most of the consumers, since the total output increases and the prices falls. So not at all difficult. Again तुम में से अक्सर लोगों को ये basics आते थे. One mistake that a lot of you are doing, you don't label your graphs. कुछ लोग तुम में से अभी तक ये ग्राफ बना ही नहीं सकते, उनको my message would be good luck. I don't know how I am supposed to help you. तुम्हें पता है ये ग्राफ आने हैं, तुम्हें पता है you have to practice it. So if you still don't do it, then मैंने तुम्हें हाथ पकड़ के तो करवाना नहीं है. And for those who are able to make these graphs, ये structure सीखते जाओ.
रिमाइंड योर सेल्व अगेन एंड अगेन टू मेक द स्ट्रक्चर कि प्राइस सीलिंग के 4 मार्क्स हैं, सब्सिडी के 4 मार्क्स हैं, द डिस्कशन और कंपेरिजन आई हैव 4 मार्क्स. उसके बाद आई मीन इफ़ यू आर हिटिंग ऑन ऑफ दीज डिफरेंट पार्ट्स, कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, यू विल स्क्वीज मार्क्स आउट ऑफ इट. प्रॉब्लम अगेन इज़ प्राइस सीलिंग पे सारा आंसर लिखा है और ना सब्सिडी की बात की है ना उनका कंपैरिजन किया है, सो यू जस्ट गेट अ मैक्सिमम ऑफ 4, नथिंग मोर देन दैट. क्वेश्चंस? Anything anybody wants to ask? चलो लेट मी मूव ऑन देन. अच्छा जी, इन्फ्लेशन का क्वेश्चन आसान, मुझे तुम्हारे पे बाकायदा गुस्सा आ रहा है. यू ट्राइड दिस क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेशन एंड यू टोटली स्क्रूड अप, टोटली, बहुत ही घटिया आंसर. माइक है तुम्हारे पास या अभी तक नहीं है? आसान अनम्यूट करो, मैंने आज तुम्हें अनम्यूट करवाना है. जी सर. आसान क्या बात है, इन्फ्लेशन का टॉपिक नहीं तुमने किया हुआ था अभी प्रिपेयर? सर वो कुछ और रीजंस की वजह से मेरा पेपर ऐसा हुआ. अच्छा चलो, मुझे बाद में लेदर से बताना. आई मीन यू आर गुड थ्रू आउट द ईयर एंड आई वाज वरीड कि एकदम तुम्हें क्या हुआ है. चलो दैट इज़ स्टिल गुड. आई थॉट पता नहीं क्या मसला हो गया. अच्छा, इन्फ्लेशन की आई हैवंट गिवन यू द वीडियोस एंड माय टारगेट इज़ कि मैं तुम्हारी इन क्लासों से फारिग हूँ तो आई गिव यू द वीडियोस ऑन इन्फ्लेशन. इट इज़ एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक. You have to be crystal clear about how to explain demand pull and cost push inflation. In most of the years तुम्हारा पूरा पेपर सिर्फ demand pull cost push inflation से होता है. Now I have already given you notes on that. मैंने तुम्हें WhatsApp एक ही टॉपिक के नोट्स किए में, demand pull versus cost push inflation. It's just a couple of sheets. अगर अभी तक नहीं आती डिमांड पुल कॉस्ट पुश, आई विल ट्राई टू मेक द वीडियोज़ एंड शेयर देम विद यू, बट बिफोर दैट उनका रट्टा लगाओ उन 2 शीट्स का एंड तुक्के ना मारा करो डिमांड एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में. नाउ लेट मी टेक यू थ्रू दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन. एक्सप्लेन व्हाट इज़ मेंट बाय इन्फ्लेशन. सो यू नो फर्स्ट 2 मार्क्स आर द डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड यूजिंग डायग्राम्स show how it can arise both as a result of shift in the aggregate demand and a shift in aggregate supply. So inflation की definition में I mean hardly anybody scored 2 marks. 2 marks हैं इसके लिए. Most of you either get 1 mark or 0 mark. पता नहीं inflation की क्या क्या definition देते रहते हो. The percentage increase in price levels over a period of time. End of story. सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि इन परसेंटेज टर्म्स यू ट्राई टू मेजर के ऑन एवरेज कीमतें कितनी बढ़ गई हैं. इसको किसी भी अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट कर लो, बट प्लीज़ डोंट लूज दीज 2 मार्क्स. इसमें क्या इतनी प्रॉब्लम है? परसेंटेज बाय विच ऑन एवरेज द प्राइसेस इन द इकोनॉमी आर इंक्रीजिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. दैट इज़ योर इन्फ्लेशन. नाउ through diagrams you have to show how it can arise both as a result of shift in the aggregate demand. So अब अपने आप को आगे बताओ. I have up to 4 marks. I have up to 4 marks for the aggregate demand से inflation कैसे होती है, up to 4 marks और aggregate supply से कैसे inflation होती है, and you have to show it through diagram. So basically almost all of these 4 marks are for a well labeled diagram जो फिर तुम्हें again I mean remember this thing, macro का diagram बना रहे हो, inflation, GDP, unemployment, you are talking about macroeconomics. So you have price levels over here and you have the country's GDP over here. Q और P लिख के आ जाते हो, you are just wasting your time beyond that point. You won't get any marks. अभी तक some of you are talking about demand and supply inflation के लिए. Remember it's a macroeconomic concept. A model is the model of aggregate demand and aggregate supply. So just draw this initial diagram. Just tell the examiner, assuming economy starts at PL star and Y star, if there is more aggregate demand in the economy, just explain at the price level, original price level, there will be a shortage, and because of that shortage the prices will start to increase, and this is known as your demand pull inflation. Now this is 3 marks. 1 mark इसमें reserved है, and that is the difficult part. I mean इसलिए don't sort of assume things. यहाँ पे जब कह रहे हो ना कि अच्छा एग्रीगेट डिमांड व्हेन इट शिफ्ट्स टू राइट, गिव वन रीज़न व्हाई दिस मे हैपन. मे बी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, सो कंजम्पशन इंक्रीजेज. मे बी यू नो देयर इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ इन अदर कंट्रीज, तुम्हारी एक्सपोर्ट बढ़ जाती हैं. बट गिव वन रीज़न व्हाई एग्रीगेट डिमांड में इंक्रीज. नाउ दिस इज समथिंग which you have to remember for all the questions on inflation.
ये कभी कभी इतना मिस हो जाता है, दैट मेक इट अ हैबिट दैट वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट एग्रीगेट डिमांड, सो tell yourselves, remind yourself that first main thing you will do is make a well labeled proper ADAS diagram, shift your aggregate demand to the right, just explain the small little thing. When aggregate demand increases at the original price level, there is a shortage, and as a result the economy moves to this new equilibrium. Uske baad, after you are done with this graphical explanation, always give one or two practical reasons कि अच्छा why may this aggregate demand shift to the right. उसमें again remember your basics, aggregate demand is equal to C plus I plus G plus NX, और aggregate demand को shift करना है तो you don't have to look beyond your monetary and fiscal policy. Interest rate, money supply, exchange rate, government spending, taxes all make these monetary fiscal policy. किसी को भी as a reason mention कर दो that your aggregate demand may increase because of this reason. So that would be your demand pull inflation. Cost push inflation में, let me do it over here on the top. Cost push inflation में again, first of all get your almost I would say 3 out of 4 marks by making this well labeled diagram. AD, AS, just shift your aggregate supply to the left, and again mention this thing that at the original price level now the aggregate supply will be much less than the aggregate demand, so there would be a shortage, and as a result the economy would move to this new equilibrium and cost push inflation will be created. Again एक reason दे दो why may aggregate supply shift to the left. Cost of production increase हो जाती है, that may happen because of price of petrol is increasing, maybe price of electricity is increasing, maybe there are more indirect taxes. You can come up with any other reason. So that would be your easy straightforward 8 marks. Now इस क्वेश्चन को छोड़ो, but I mean this is what I'm saying, demand pull and cost push inflation, most probably you will have to explain it somewhere, पार्ट बी, सेक्शन बी, सेक्शन ए, कहीं ना कहीं ये पकड़े जाओगे इसमें तुम. तो रिमेंबर दिस थिंग, फर्स्ट मेक अ डायग्राम, then write a simple line, when aggregate demand increases at the original price there is a shortage, therefore price levels increase, this is your demand pull inflation, and then remember एक reason दे दो why aggregate demand may increase. Whenever you have to explain cost push inflation, again start off by making a well labeled diagram, shift your aggregate supply to the left, again say this line, at the original price level you see there would be a shortage and therefore cost push inflation will be created, and by giving one practical reason why aggregate supply may shift to the left. ये तुमने ऑलमोस्ट सारे डिमांड पुल कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में करना है. एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? जी सर, आप कैनेडियन एग्रीगेट डिमांड का इसमें नहीं बना सकते क्या? बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं. आई मीन इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन दैट वोंट ऐड अ लॉट, बट बिल्कुल कर सकते हैं. तुम में से कई लोगों ने किया भी था, दैट इज़ परफेक्ट. मैं तुम्हारे साथ एक वीडियो शेयर करूँगा ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन की वजह से. आई वांट यू टू नो दैट एग्रीगेट कैनेडियन एग्रीगेट सप्लाई मैंने अपलोड किया, बट आई एम अज्यूमिंग तुम में से किसी ने अभी तक देखी नहीं होगी. आई विल शेयर दैट विद यू. इट्स अ लास्ट वीडियो इन द सेक्शन ऑन ADAS. उसमें मैं आखिर में आई एम जस्ट समराइजिंग द होल मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस थ्रू दिस मॉडल ऑफ ADAS, एक ही स्क्रीन पे साइड बाय साइड थ्रू बोथ द कैनेडियन एंड द मॉनेटरिस्ट मॉडल. And the purpose of that last video is कि ये दोनों equivalent हैं, you can use them in exactly the same way, इनमें कोई इतना फ़र्क नहीं है. So look at that video so you are comfortable कि कहाँ पे Canadian aggregate supply यूज़ कर सकते हो और कहाँ पे दूसरी कर सकते हो. तो anything else? चलो let us look at the last part here as well. Discuss whether domestic effects of inflation are more serious than external effects of inflation. So इसमें again definition देने पे time ना ज़ाया करना. You have to sort of 4 marks. You have to discuss the domestic effects of inflation. 4 marks. You have to discuss the external effects of inflation, and then 4 marks. You have to discuss which of these two are more serious. Now, I don't think I will go into the detail of what these domestic external effects are. मैं तुम्हें काफ़ी डिटेल में करवाएंगे, but what I want you to learn at this point is to pick up any 2 domestic consequences and just try to explain each one
in, I won't say detail, but जो भी उसके लिए ज़रूरत है. So most of you said that domestically, first of all, money loses value and therefore purchasing power falls and therefore people cannot buy as many goods as before, so living standard कम हो जाते हैं. That is all I mean by explain this point. Don't just say purchasing power गिर जाती है. Just ask yourselves कि एग्जामिनर पूछेगा अच्छा भाई तो क्या है, फिर क्या मसला हो जाता है. सो आंसर दैट थिंग कि अच्छा फिर ये मसला हो जाता है कि यू कैन नॉट बाय सो मैनी गुड्स. सो अपने आप से ये क्वेश्चन पूछा करो एंड ट्राई टू आंसर एज मैनी सोज एज पॉसिबल. सो फॉर एग्जाम्पल लेट मी रिपीट दिस. Domestic consequence, if there is inflation, the purchasing power falls. So the consumers, they won't be able to buy as much as before. So, well, with fewer goods and services, their living standard will fall. तो तुम्हारे पास पूरा वो एक एनालिसिस आ जाता है ऑफ द सिंपल पॉइंट. मोस्ट ऑफ यू देन मेंशन द आर्बिट्री रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ बिटवीन द लेंडर्स एंड बोरोअर्स, एंड आई वाज हैप्पी दैट मोस्ट ऑफ यू डिड मेंशन कि जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है बिटवीन लेंडर्स एंड बोरोअर्स, दिस इज़ अल्टीमेटली अ प्रॉब्लम बिकॉज when there is this arbitrary redistribution, then lenders, they are discouraged to lend, and therefore when there is overall lack of lending activity in the economy, तो उससे ultimately तुम्हारे मुल्क में investment activity भी कम हो जाती है. So quite a few of you did mention this thing. I shouldn't say quite a few. तुम में से काफ़ियों का पेपर बहुत गंदा था. Half of you were really good, half of you were really bad. So but I hope just sort of again and again repeating this thing to yourselves कि इनको questions को तुमने break down कैसे करना है, that will take you a long way, a lot of you. अच्छा, external consequences में again you had the reasons, some explained it better than the others. So external में just हमने current account deficit पढ़ा है, हमने exchange rate पढ़ा है, and all of those things we have been saying. अच्छा, if there is inflation, then your country's goods, they lose international competitiveness, so exports will fall and imports will increase, your current account will go into a deficit, your trade balance will go into a deficit, your exchange rate will come under pressure to depreciate. Some of you came with an even more simple reason कि अगर तुम्हारे मुल्क में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, then foreign investors will be discouraged to come and invest here. So again देखो, यहाँ तुमने कोई तोपे नहीं चलानी. I mean it's the same basic things. Point ज़हन में नहीं आ रहा, just through your head go through कि अच्छा हमने कौन कौन सा टॉपिक किया था, and I'm sure you will pick up something कि अच्छा external effect of consequence में मैं क्या चीज़ डाल सकता हूँ. The important part is again this breakdown. तुम्हें पता हो मैंने कोई 2 external consequences ढूंढने हैं and I have to write a line about it. और आखिर में again don't forget to do this comparison. I remember I specifically told you about this question on inflation, domestic versus external in class. Some of you, very few of you seem to remember this thing. इसका आसान यहाँ पे आंसर है. A country like China, it has a huge external sector. Most of its country's aggregate demand is composed of export and imports. So for countries like China with huge trade, क्या कहना चाहिए, trade as a big component of that country's economy, तो वहाँ पे external effects are very serious. They are very important. Whereas a country like USA, where the biggest component of aggregate demand is domestic consumption, वहाँ पे the domestic consequences of inflation are more important. अगर example नहीं देते और example याद नहीं रहता, just say whether domestic or external consequences more important simply depends on whether the country is very involved in international trade, such as give an example of China. हम सबको पता है पूरी दुनिया के साथ trade करते हैं, versus a country which is isolated, which doesn't trade with a lot of countries. Give the example of North Korea. I am sure तुम सबको पता है कि North Korea जो है doesn't trade with other countries. So that is your question number 4. कोई question हो तो मुझे बताओ. Anything you want to ask? सर इन्फ्लेशन से लिविंग स्टैंडर्ड्स कैसे कम होते हैं? Purchasing power कम हो जाती है ना. You and I, if we are earning an income and suddenly there is inflation, then next month we will be able to buy less of whatever we buy. तो हमारा living standard कम हो जाएगा. The less we consume, the